Hello all, welcome to my channel. I'm Vivek Gaurav and I'll be teaching you dynamic programming. And before we go ahead, a humble request from my side, please like and subscribe to my channel and please click on the bell icon so that you'll be getting notified every time a new video is coming. Now, let's get started. Today we are going to solve a very simple problem which is a Fizz problem, and it is often asked in the software development job interview, right? And it is always a good idea to know about these kind of questions. So what does the question mean, right? So here it is saying that write a program that prints the number from 1 to 100 and for multiples of 3 print Fizz instead of the number, and for multiples of 5 print Buzz, right? So you see here 1 2 and then 3. Instead of 3 we are having Fizz here. 4 5, instead of 5 we are having Buzz here. Then 6, instead of 6 we are having 3. 7 8 9, it is again a multiple of 3, so Fizz is there. Then 10, it is a multiple of 5, so Buzz is there. Then 11 12 13 14 and then 15, and in case of 15 we are having Fizz Buzz here, right? So Fizz is also there and Buzz is also there, right? So the question is very easy. The question is very easy, like, even if you know a small amount of, like, if you know operators, what are operators, right? If you know operator and if you know about this particular operator which is called modulus operator, then you are already on the track. Then you need to use loop, right? For loop, because it is given like 1 to 100, so we will be using a loop. And then we use if conditional, if statement, right? So using these three things the question can be solved easily. Okay, and most of the time what happens is that you go with the line. So it is saying that multiple of 3 print Fizz, right? And then multiple of 5 print Buzz, and for the other you have to print Fizz Buzz, right? So what you do is that you write a code something like that. So what I will do now is that I'll take you to my visual code, okay, and I'll start writing the program for you. Okay, so here I'm writing the program in C++. Okay, so hash include IOStream. Okay, hash include IOStream, and then I'll be giving that namespace using namespace std, and then we'll be writing the main function, so int main. Now inside that what I'll be doing is that I'll be running a loop, because I do not have to take any user inputs. I'll be starting a loop. I is equal to 1, I less than equal to 100, and then I plus plus, right? And if you have read the question carefully, then what you will do is that this is how you are going to write the program. If I modulus 3 equal to 0, then what you are going to do is that you are going to write cout, you are going to write Fizz, right? You are going to write Fizz over there, right? And then you will write else if, you will write I modulus 5 equal to 0, right? Equal to 0. Then there what you are going to do is that there you are going to write Buzz, right? There you are going to write Buzz. And again you will check one more condition. Which is see, if I modulus 15 equal to 0, or what you can do is that I can write I modulus 3 equal to 0 and I modulus 5 equal to 0, right? So here I 3 and 5 I combined it and I made it 15. In that case what you will do is that you will write cout, you will write Fizz, and then space Buzz. This is what you are going to write basically, right? And of course you'll be giving some spaces after each one of them, right? So that you get a space between that. And in the else case scenario what you are going to do is that you are directly going to print I. Okay, and if I run this program now, okay, if I'll run this program now, you might think like, that everything is perfect. Your program is absolutely perfect, there is no error, you will get the output. But there is a problem. Which is a very classic mistake. So you see here what is the problem. In the meanwhile what I will do is that I'll just open my pen so that I can write it over here. Okay, you see the output which is coming here, 1. Okay, so I will give a space over here. Just let me write one space so that you can see the output clearly. Okay, so I will give a space over here and then I'll run the program once again. Now you see, I'll take my pen and start checking here. So now you see 1 2 3 Fizz is coming, 4 and then Buzz is coming, very good. 6 Fizz, 7 8 9 9 Fizz is coming, 10 Buzz is coming, 11 12 is Fizz, 13 is 13 14 and then 15, it is 15. We saw that it should be Fizz Buzz. This is what it should be, right? It should be Fizz Buzz. But what you are having here is that you are having Fizz. Now the question is that why you are having Fizz? You already have that I modulus 15 here, and it should be, it should also get evaluated. Then why it is not happening? So as I was pointing out, it is a very classic mistake. What is the classic mistake? The classic mistake here is that, okay,
you have written the condition this one as the if part. Now let's suppose the number is going with 15. So 15 modulus 3 equal to 0, right? We all know that 3 is a factor of 15. So this condition turns out to be true. And once this condition turns out to be true, it automatically prints that phase and it never executes any of the remaining part, right? Because this is what happens with the if statement. If one of the statement gets executed, if one of the condition is true, the rest of the cases with the rest of the conditions will not be even checked, राइट यही होता है ना कि आप एक कंडीशन अगर यहाँ पे आपका ट्रू हो गया तो बाकी कंडीशन पे वो जाएगा ही नहीं, सीधे आपके अगले स्टेटमेंट पे जाएगा और यहाँ पे अगला स्टेटमेंट है नहीं तो लूप को वो रिपीट कर देगा, आई के वैल्यू को बढ़ा के वो 16 कर देगा. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस तो हम क्या करते हैं ना, आई विल जस्ट शो यू हाउ इट इज वर्किंग. ओके, so let me debug the program. Okay, debugging is the process of finding the error and understanding the flow of the program. आप इस एरिया पे फोकस करना जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, आपको वहाँ से समझ में आएगा. देखो अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इन सब वैल्यू को ना आई इक्वल टू 3 को हम वॉच पे डाल देते हैं. यहाँ पे देखो ये फॉल्स है, अभी आई की वैल्यू जब 1 है, ठीक है. यहाँ पे ये वॉच वाले एरिया पे आप ध्यान देना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आप देखो, ठीक है. अब क्या किया हमने, अब आई की वैल्यू यहाँ पे भी फॉल्स है, ये भी नहीं जाएगा. तीसरे कंडीशन को चेक किया, यहाँ पे नहीं हुआ. देखो ये कंडीशन कब चेक कर रहा है, जब पहला फॉल्स था, दूसरा फॉल्स था, तब तीसरे में आया है. चौथा भी फॉल्स, चौथा में क्या किया, ये भी फॉल्स था तो सीधे एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट किया, आई प्रिंट कर दिया. आपको यहाँ पे अभी आई दिखेगा, आपको यहाँ पे आई दिख रहा होगा आई गेस, राइट. नेक्स्ट वैल्यू गई 2 हुई, 2 में भी यही हुआ, एल्स पार्ट पे जाएगा. 3 जैसे ही हो रहा है, देखो ये पार्ट ट्रू हो गया. अब यहाँ पे देखो ट्रू जैसे ही हुआ, दिस पार्ट इज ट्रू, इट प्रिंटेड सी आउट फिज, राइट. आफ्टर दैट ये ब्लू लाइन, ये येलो लाइन पे आप ध्यान देना, ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से निकला और सीधे वापस चला गया, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 4, है ना. तो यानी कि कहने का मतलब क्या था कि अगर एक बार ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो नीचे किसी पार्ट में तो जाएगा ही नहीं. और आपने ये कंडीशन कहाँ रखा है, ये कंडीशन आपने यहाँ रखा है, यानी कि किसी की भी केस में नेवर एवर दिस कंडीशन इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड, नेवर. ये कभी होगा ही नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पहले 2 सिचुएशन ऐसा है जो हो जाए ऑलरेडी, है ना. आई विल शो इट टू यू, आई विल चेंज द वैल्यू एंड आई विल शो इट टू यू. देखो अभी वैल्यू थी आई की वैल्यू कितनी 4, अब हो गई 5. 5 में ये बस पे जा रहा है, देखो बस पे जा रहा है, फिर इंक्रीमेंट करके 6 पे चला गया, right. And now what it will do is that 7 हुआ, अब it will become 8, 9, right. 10 हो गया है, then 11, then 12, it will become 12. yes, it has become 12. now 13 हो गया. अब हम लोग 15 जब होगा ना तो हम लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे. देखो 14 में देखो सी आउट एल्स पे गया ये, अब यहाँ पे कहाँ है, अब आई की वैल्यू हो गई 15. अब देखो यहाँ पे तीनों कंडीशन ट्रू है, तीनों कंडीशन ट्रू. अब यहाँ पे देखो ऑल द 3 कंडीशंस आर ट्रू. लेकिन भैया तीनों कंडीशन ट्रू होने के बाद पहला कंडीशन कौन सा है, पहला कंडीशन तो आपने ये लिखा है, तो ये इसको एग्जीक्यूट करके कहानी खत्म कर देगा, इस सब पे तो जाना ही नहीं है इसको, ये वाले पूरे पार्ट में ये जाएगा ही नहीं, है ना. देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे सी आउट फिज किया, अभी आपको यहाँ पे फिज मिलेगा, वापस चला गया, देख रहे थे, राइट. तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि ये होने वाला है. तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ये पार्ट को उठाना है, ठीक है, यहाँ से इसको कट मारना है और ये पार्ट को सबसे पहले आपको चेक करना है, ये पार्ट को आपको सबसे पहले चेक करना है. अगर ये पार्ट को आप सबसे पहले चेक नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा ही गलत आएगा, है ना. अब अगर हम इसको रन करें और हम डिबग ना करें, अब इसको अगर हम रन करें सीधे, तो अभी आप आउटपुट देखना, अभी आप आउटपुट देखो और देखो आपको आउटपुट में सही मिल रहा होगा. 1 2 फिज, 4 बज, 6 फिज, 7 8 9 में फिज, 10 में बज, 11 12 में फिज, 13 14 15 में फिज बज, देख रहे हो. फिर 16 में फिज, 16 में 16 17 18 में फिर से फिज, राइट. सो दिस इज अ वेरी क्लासिक प्रॉब्लम एंड क्लासिक मिस्टेक दैट पीपल मेक ऑफन व्हेन राइटिंग द प्रोग्राम. वो क्या करते हैं ना, वो प्रोग्राम को ऊपर से पढ़ते हैं. अच्छा 3 का मल्टीपल, तो चलो पहले आई मॉड्यूलस 3 कर दिया हमने. दूसरा क्या था 5 का मल्टीपल, चलो आई मॉड्यूलस 5 कर दिया हमने. अच्छा 15 का भी देखना था तो आई मॉड्यूलस 15 कर दिया. लेकिन भैया जब ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो फिर ये दोनों पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये दोनों पार्ट तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं है, राइट. तो दिस इज वन वे. तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डाल देना होगा. आप इसके जगह पे एक और चीज लिख सकते हो, राइट. यू कैन राइट वन मोर थिंग ओवर देयर इफ यू डू नॉट वांट टू राइट दैट, यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस. एंड ऑपरेटर का भी आप यूज कर सकते हो, एंड यू विल राइट आई मॉडुलस 5 इक्वल टू 0. आप ये भी लिख सकते हो, देन ऑल्सो योर प्रोग्राम विल बी एब्सोल्युटली फाइन. अभी आप यहाँ पे देखो, अभी भी आप इसको देखोगे तो आपका प्रोग्राम में यहाँ पे फिज बज आपको मिल रहा है ना.
सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट फिज बज प्रॉब्लम। फिज बज प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। फॉर लूप लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और ऑपरेटर यूज होगा। ऑपरेटर कौन सा, मॉड्यूलस ऑपरेटर। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार हम बता दें आपको, ये आपको रिमाइंडर देता है। आप जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे कि मान लो 5 मॉड्यूलस अगर आप 3 करते हो तो ये आपको देता है 2। कैसे देता है 2, 3 5, यहाँ पे आपको एक बार में यहाँ पे 3 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो यही 2 आपको ये वापस कर देता है। ठीक है, दिस इज व्हाट मॉड्यूलस ऑपरेटर इज। अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे ना, कि ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ना, ये बहुत कॉस्टली ऑपरेटर है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है, क्या कुछ ऐसा तरीका है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग बिना इस ऑपरेटर के सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्या इस प्रॉब्लम को हम लोग बिना इस ऑपरेटर के सॉल्व कर सकें, अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।